Okay. Hi, Dimitri. Um, mhm. I haven't thought about it. Do you know if there is particular section for toast or they're just scattered around the screens? Yeah. So this is a good one. It seems it has this with two buttons basically. This action button and then this cancel button. Yes, there could be. Yeah, I just heard that there could be multiple notifications, but not after that. Maybe stack something like iOS notification, right? Some stack kind of thing could work. Yeah. Why will there be a blue dot? Maybe some mistake. But it's not inside it. Bring on a stage and any action would be part of room model, I think. We don't check for anything, right? We just end the call if there's any error, is it? Okay, and if it's not a fatal one, we don't do anything in the example app. Yeah. Okay. Do we show this notification? Because the call would essentially end, right? So maybe we, yeah. So I think fatal alert should be something like toast, like that comes on top of everything. Or at least like, yeah, user can't interact with anything else after that. So errors is gonna be different. So this is just notifications, I guess. So Matthew raised hand. So someone raises hand, and then raise hand essentially is the peer model one, right? Peer metadata. So it's already in RoomKit. Maybe the errors and warnings notification will be from the model. Yeah. So RoomKit will get to know about it and it will push that into the toast. Does that make sense? RoomKit will get to know about that Matthew has raised hand, right? Through peer metadata. Yeah, yeah, that we need to think about. Mm-hmm. The one with this will go away once they bring them on stage. There'll be multiple sources for this notification. Probably like we can do something like this. Yes, yes. Yeah, that sounds good. तेईस चल जाएगा थोड़ा सा है हम ही दोनों का चलेगा काम UI elements to confirm if we have the right versions that uses brighter, and then the modal that needs to use dim, parity between the design and the element, and then level tokens in each case, right? So they change the primary. Let's not add too many configurations on the dashboard. अच्छा अब शुरू है हाँ अब शुरू है सो यहाँ पे हमारे बजाज के सेक्सी लेग्स दिख ही रहे हैं आप बैकग्राउंड में finally I've got my Garmin Venue 2 Plus. It has traveled thousands of kilometers from US to India to now Abu Dhabi, but now I finally have it. Super excited, and now I will open it. Complete setup of a Venue 2 Plus. ये देखो क्या हो रहा है, setup हो रहा है. Oh my god. Focus. Wow. Next. ओके बाकी सारी चीज़ें तो थोड़ा टाइम लेगा बट दिस इज़ द Venue 2 Plus जो चालू हो चुकी है. वाओ. अब इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी हम ऑन कर लेंगे जस्ट इन केस आपको लगता है वो चाहिए. नाइस है एकदम चिल्ला रहा है जो चल के करना. हां चैलेंज दे रहा है कम आउट. दोस्तों ये ब्लॉग हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ 15 मिनट की इलेक्ट्रिसिटी चली गई है जो कि काफी रेयर अकरेंस है. करने को नहीं है कुछ करने को हमारे पास है नहीं क्योंकि इंटरनेट भी नहीं चल रहा है.
एसी भी बंद है, थोड़ी देर में गर्मी हो जाएगी, पता नहीं कैसे हमारा जीवन व्यापन होगा अब इसके बाद। लाइट गांव वाली फीलिंग आ रही नहीं? नहीं, गांव में इतना सुविधा तो नहीं था, इतना सोफा सेट नहीं था और इतना सेक्सी ये भी नहीं था। पिलो पैसा नहीं है जिंदगी, पैसा नहीं है जिंदगी। कॉफी नहीं बन पा रही है, चलते चलते मीटिंग बंद हो गई भाई हमारी तो। लाइट जाने का ऐसा कहर हुआ दोस्तों, कॉफी नहीं बन पा रही है। लवाजा कॉफी है ये, एक क्लासिको कॉफी है 1895 से। कहाँ की है ये तो हमको भी नहीं पता, इटालिया लग रहा है, इटालियन ट्यूनिस से है ये कॉफी, ट्यूनिस। ट्यूनीशिया। और ये भाई साहब बोल रहे थे इनके पास पैसे नहीं है। जो डिस्काउंट लेड ग्रोथ के सबसे बड़े हमारे मैनेजर सारे भाई ये मरवाएगा भाई हमें। महंगा क्या होता है? यूज किया है तो मेरा तो बड़े वाला तो बचा है, बड़ा वाला नहीं जिस हिसाब से वो इंट्रो बस उठा के चल गया ना, वो वाला बचा चाहिए क्यों ना हो। Hi, how are you, sir? Just a gin and tonic. Yes, for sure. قريت كزبرة الصودا الشريمب Or we go extinct. आवाज कर लिए भाई। भाई आगे डी दबा दिया करो, ऐसा होता है तो मेरे भाई 1 मिनट रुको यार, 1 मिनट हो गया भाई। तो लड़का की कोई एंजॉय करता है यार, लोगों ने खुद ने एंजॉय किया, बता ना आपने स्लाइड मार